started with May June 2023, paper 4 variant 3 IGCSE physics. So IGCSE physics May June 2023, paper 4 variant 3. Let's start with it. Please make sure that you have a calculator on your hand. फिगर 1.1 shows a balloon filled with helium gas. अच्छा जी आपके पास एक balloon है that is filled with helium gas. The mass of the balloon is 120 kg. You have to calculate the weight of the balloon. How will you do that? Do you remember weight is equals to mg? Can you realize हमें g की value यहाँ पे नहीं given. Whenever the value of g is not given, we take g as 9.8 in IGCSE physics. What will your answer of weight come out to be? 120 into 9.8. The answer comes out to be 1176 Newton. But in IGCSE physics, we round our answers to two significant figures. 1200 Newton comes out to be your weight. Perfect. The resultant force on the balloon is this. Show that the acceleration of the balloon is 0.45. Which formula will you use? Resultant force is equals to ma. Resultant force 54 है. Beta mass क्या है? What is the mass? If you come here, the mass is 120 kg. Can you calculate the acceleration? Yep. 54 divided by 120 is equals to your acceleration. Acceleration की वैल्यू निकाल लो बेटा. क्या आंसर आ रहा है? Acceleration comes out to be 0.45 meters per second square. Simple. The balloon accelerates from rest. Okay, so your initial velocity is 0 at an acceleration of this for a time of this. Calculate the final velocity. You have to calculate the final velocity of the balloon after 8 seconds. Which formula will you use? V is equals to u plus at. बेटा u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 0.45, टाइम क्या है 8. What does your final velocity comes out to be? 0.45 into 8. Final velocity is 3.6 meters per second. Okay. Now you have to calculate the distance traveled by the balloon in the first 8 seconds. बच्चे जो आपका बलून है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन द फर्स्ट 8 seconds. वी हैव टू कैलकुलेट दैट. किस तरह करेंगे? एनी आइडिया? इफ यू रियलाइज एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? हाँ जी, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है? यस, जीनियसेस, डू यू रिमेम्बर? हाँ जी, average speed is equals to the initial speed plus final speed divided by 2. बेटा आपकी इनिशियल स्पीड क्या है 0, फाइनल स्पीड क्या है 3.6 divided by 2. What will your average speed come out to be? 1.8 meters per second. Now do you also remember बच्चे एक और फॉर्मूला याद है कि एवरेज स्पीड is equals to what? Is equals to the total distance upon total टाइम. एवरेज स्पीड का ये दूसरा फॉर्मूला हुआ करता था. टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. एवरेज स्पीड हैज टू फॉर्मूलाज. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस टोटल डिस्टेंस. बच्चे आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालोगे? आर यू गिवन द एवरेज स्पीड? यस, 1.8. आर यू गिवन द टोटल टाइम? यस, 8. So total distance is equals to what? 1.8 into 8 is equals to your total distance. Calculate कर लो बेटा ये क्या आता है. 1.8 into 8 is 14.4 meters is your total distance. If I convert it till two significant figures, 14 meters is your total distance. Simple, nothing complicated here. बहुत आसान है. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's move ahead. Now, define pressure. अच्छा, pressure क्या होता है भाई? What is pressure? Pressure is force per unit area. Perfect. Describe how the pressure in a liquid varies with its depth and its density.
आपका प्रेशर किस तरह वेरी कर रहा है विद द डेप्थ एंड विद द डेंसिटी, व्हाट विल यू से? प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेप्थ इंक्रीजेज, डेंसिटी के बारे में क्या करोगे? प्रेशर इंक्रीजेज एज द डेंसिटी इंक्रीजेज, सो यू विल से pressure increases as depth increases. Perfect. What about density? Hmm. What about density? You will say pressure increases as density increases. Simple as that, nothing complicated here. State 2 energy resources for which sun is not the main source of energy. भाई कौन सी energy resources ऐसी हैं जिसके लिए sun is not the main source of energy? Geothermal, nuclear, tidal, you can write anything. Geothermal, nuclear, and for the third option you can write tidal. Perfect. State and explain whether each of the following methods of electrical power generation is renewable. पावर जनरेशन इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल, बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूल इज यूज्ड अप, और न्यूक्लियर फ्यूल जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है बेटा, दुनिया में हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल लिमिटेड है, तो पावर जनरेशन इन अ न्यूक्लियर स्टेशन इज नॉन रिन्यूएबल एज द न्यूक्लियर फ्यूल न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इज लिमिटेड इन सप्लाई, जो आप न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हो दैट इज लिमिटेड इन सप्लाई, सिंपल. पावर जनरेशन फ्रॉम वेव्स इन द सी, भाई अगर आप वेव से पावर जनरेशन कर रहे हो वो रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल है बेटा. एंड व्हाई इज इट रिन्यूएबल? स्टेटमेंट बताओ, रिन्यूएबल क्यों है? बिकॉज वेव्स विल कंटिन्यू फॉर एवर. वेव्स आर अ नॉन डिप्लीटिंग रिसोर्स, तो यहाँ पे लिख दो waves will continue forever and they don't deplete, या खत्म नहीं हो जाती waves. Simple. Let's further move ahead. State matter, which state of matter, solid, liquid, of gas, has the greatest thermal expansion and which has the least? Greatest thermal expansion कहाँ होगी? गैस में. Least thermal expansion कहाँ होगी? सॉलिड में. ओके. Describe in terms of motion and arrangement of particles the structure of solids and gases. बेटा आपने डिस्क्राइब करना है द मोशन एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. सॉलिड में पार्टिकल्स किस तरह अरेंज होते हैं? इन ए रेगुलर रिपीटिंग स्ट्रक्चर. और मोशन क्या होता है सॉलिड में? दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशंस. तो लिख लो बेटा, यहाँ पे सिंपल सा लिख लो कि इन सॉलिड्स the particles the particles are arranged in a regular repeating pattern. और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे? The particles vibrate about their mean position. पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? दे आर इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न एंड दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हेयर, कुछ भी यहाँ पे हमने डिफिकल्ट नहीं लिखा, ठीक है. अब गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड. गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड. एंड व्हाट इज द मोशन? मोशन किस तरह से होता है? हाँ जी, गैसेस में पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है? हाँ, एनीवन? द पार्टिकल्स मूव फ्रीली. द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड रैंडमली, जो भी आप लिखना चाहो.
डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट मास to cause a change in temperature of 1 degree centigrade. Energy required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree centigrade. तो यहाँ पे लिख लो, specific heat capacity is the energy required to raise the temperature of a unit mass by 1 degree centigrade. Simple. A student carries out an experiment to determine the specific heat capacity of a metal. A cylinder of the metal is heated by a 12-volt electrical heater. State the reading that the student takes. बेटा आपने क्या डिटरमाइन करनी है? यू हैव टू समहाउ डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Specific heat capacity is equal to energy divided by mass divided by change in temperature. ओके, अब एनर्जी किस तरह निकालोगे? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, मास डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि यू ऑलरेडी हैव द रीडिंग ऑफ पावर दैट इज 12 वोल्ट्स। मिसिंग वेरिएबल्स कौन से हैं? टाइम आपने मेजर करना है, मास मेजर करना है, and change in temperature measure करना है. That's why this question is of 3 marks. So first reading that you have to take is the mass of the metal. Second reading क्या लेनी है? Time for which the heater is switched on. कितने टाइम के लिए हीटर आपका स्विच्ड ऑन है? Lastly, you have to calculate change in temperature. How will you calculate change in temperature? Change in temperature calculate करना है by calculating final temperature minus initial temperature. Simple. So you will measure final temperature and initial temperature to calculate the change in temperature. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. Figure 4.1 is an incomplete ray diagram showing an object O, a converging lens, and the principal axis. The focal points of the lens are labeled F. Okay. Complete the ray diagram to draw the image formed by the lens. Label your image I. अच्छा जी, आपने इमेज को I लेबल करना है. कैन यू रियलाइज दीज आर डाइवर्जिंग रेज? बच्चे ये क्या है? डाइवर्जिंग रेज है. डाइवर्जिंग रेज डू नॉट मीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. बच्चे डाइवर्जिंग रेज क्या कर रही हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मीट नहीं करती. तो हम क्या करेंगे? We will extend these rays in the backward direction. Just give me a minute, मैं बताता हूँ क्या करना है. Basically, can you realize these are diverging rays? पहले तो ये realize करो कि ये diverging rays है ना, ये और ये. This first ray and second ray, they are diverging rays. Diverging rays forward direction में meet नहीं करती. Where will they meet? हाँ जी, where will they meet? They will meet in the backward direction. बेटा डाइवर्जिंग रेज कहाँ मीट करेंगी? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो आप इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो इस तरह. इस वाली रे को भी बैकवर्ड एक्सटेंड कर दो बेटा, लाइक दिस. ठीक है, और इसको डॉटेड भी बना दो. हाँ. वाई एम आई मेकिंग दिस डॉटेड? क्योंकि ये रेज इमेजिनरी हैं. द पॉइंट वेयर दीज टू रेज मीट इज योर इमेज. बेटा बात समझ आई? क्या आप रियलाइज कर सकते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रेज डाइवर्जिंग रेज है. डाइवर्जिंग रेज से आप इमेज कैसे बनाते हो? यू एक्सटेंड देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दिस इज योर इमेज.
ठीक है, ये आ गई आपकी इमेज आई। सिंपल। State three descriptions in the list which describe the image formed in A part 1. यार ये इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? The image is enlarged, as you can see. Image क्या है? Magnified है, enlarged है. Image is what? Upright. ठीक है यार, image upright भी है. And image is virtual as well. Virtual क्यों है? क्योंकि object and image are on the same side. That's why the image is virtual. Okay. State the name for the defect of vision that can be corrected by a converging lens. Converging lens से कौन सा डिफेक्ट करेक्ट हो सकता है? याद है बच्चों? Long sightedness can be corrected by a converging lens. लिख लो. Long sightedness can be corrected by a converging lens. और diverging lens क्या करेक्ट करता है? Short sightedness. चलो, let's move ahead. Describe how a converging lens corrects the defect in A. You may find it helpful to draw a ray diagram. अब देखो, अगर एग्जाम में आपके पास टाइम है ना, तो अच्छी सी डायग्राम बनाना. लॉन्ग साइटेडनेस. बेटा, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हुआ करता था? डज एनीवन रिमेम्बर? लॉन्ग साइटेडनेस में क्या हुआ करता था? यू कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. बेटा, आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते थे. So, sir, what do you mean by that? Let me show you. Whenever you have long sightedness, you cannot see nearby objects clearly. What will happen is that these rays will meet beyond the retina. ये सारी की सारी रेस देख रहे हो कहाँ मीट कर रही हैं? Beyond the retina, you can write it here. ये देखो, beyond the retina. ठीक है. अब लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट किस तरह करते थे सर? अब लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट किस तरह करते थे? वेरी वेरी इजी. यू ड्रॉ द सेम डायग्राम, बट दिस टाइम देर इज वन सिंपल चेंज. along with the converging lens in your eye. बेटा, converging lens जो आपकी आई में लगा हुआ है, उसके साथ एक और converging lens लगा हुआ है यहाँ पे. what will happen now? The rays from a nearby object will converge on the retina. अब सारी की सारी रेज रेटिना पे कन्वर्ज होंगी. जस्ट फोकस. ये लो भाई, सारी की सारी रेज आपकी रेटिना पे फोकस हो गई. कैन यू रियलाइज हाउ लॉन्ग साइटेडनेस इज करेक्टेड? बेटा, लॉन्ग साइटेडनेस में होता क्या है? योर इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना. लॉन्ग साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए यू हैव अ कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस की वजह से क्या होता है? योर इमेज फॉर्म्स एग्जैक्टली एट द रेटिना. तो आप इसको लिखोगे किस तरह? हाउ विल यू राइट दिस? You will say the converging lens. You will say converging lens. Converging lens reduces the focal length. Focal length reduces the focal length of the lens. Converging lens क्या करता है? Reduces the focal length of the eye कह लो, of the lens कह लो, causing the image to be formed back on the retina. Causing the image to be formed on the retina. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. लेट्स फर्दर मूव अहेड.
Two types of electromagnetic radiation are used in glass optical fibers for high speed broadband. State the type of electromagnetic radiation other than infrared that is used in glass optical fibers. Infrared radiation. अदर देन विजिबल लाइट हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स यूज करते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है? इफ यू रीड अहेड, क्या लिखा हुआ है? Say two reasons why these two types of infrareds are used in glass optical fibers for high speed broadband. अच्छा जी, ये दो types of waves क्यों यूज की जाती हैं? Because glass is transparent and hence visible light and infrareds are visible. ठीक है। Second point क्या है? Visible light and infrared can carry high amounts of data. They can carry high amounts of data कह सकते हो, या they can carry high rates of data. High rates of data. यहाँ पे कैन कैरी भी लिख दो, एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कब मार्क्स काट ले। ओहो, आई एम रियली फीलिंग ill today, so do pray for me if you are watching this video. Can carry high rates of data. Second क्या है? Glass is transparent, hence visible light and infrared can be seen. Hence visible light and infrared can be seen. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा। The critical angle for glass in optical fiber is this. Calculate the refractive index of the glass. How will you calculate the refractive index of glass? N is equals to 1 over sine C. Critical angle क्या है? 45. 1 over sine of 45 is your refractive index. Can you calculate your answer बेटा? 1 divided by sine of 45. बताओ आंसर क्या आ रहा है? The answer comes out to be 1.41 is your refractive index. In IGCSE physics, we keep our answer still two significant figures. 1.4 is your answer. Simple. Let's further move ahead. Figure 5.1 shows an optical fiber made of glass described in one. अच्छा जी. On figure 5.1, draw carefully a ray of light in fiber undergoing total internal reflection. Whenever you undergo total internal reflection, your angle of incidence is greater than the critical angle. Your angle of incidence should be greater than 45 degrees. How will you show total internal reflection? Like this. At an angle greater than 45 degrees. बेटा कोई भी एंगल बना लो that is 45 डिग्री से greater. बिकॉज आपका क्रिटिकल एंगल 45 है, तो आप चाह रहे हो कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ग्रेटर देन 45। ड्रॉ नॉर्मल अगेन, show total internal reflection again, and now you can move outside like this. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन भी मार्क कर देते हैं। ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्शन है। सिंपल। An electrical heater uses a resistance. ठीक है, resistance wire of resistance 26 ohms. ठीक है, the power dissipated in the resistance wire is this. You have to calculate the current in the resistance wire. How will you do that? Power is equals to I square R. पावर की वैल्यू क्या है? 2500. करंट हमें नहीं पता, रेजिस्टेंस इज 26. 2500 divided by 26 का अंडर रूट इज योर करंट. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट बेटा? करंट की वैल्यू निकाल सकते हो शहजाद दो. 2500 divided by 26. The value of current comes out to be 9.8 ampere. Simple, easy peasy, lemon squeezy. इससे आसान क्या हो सकता है बेटा? चलो, let's further move ahead. Now, the resistance wire of the heater has a length of this, cross-sectional area of this. ठीक है. When your length is 1.2 meters, cross-sectional area is 7.9, 10 is the power of minus 7. Your resistance is 26. Okay, so write it here.
Resistance is 26 ohms. Okay. A new heater is designed using the wire of the same material which has a length of 1.8. Okay. Now your length is 1.8 meter and cross sectional area is 5.8 10 is to the power of minus 7 मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ओके बेटा आपने नई रेजिस्टेंस निकालनी है या यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर हाँ जी हाउ विल यू कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कैसे निकालोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर टू की पॉइंट्स. You have to remember that resistance is directly proportional to length. Can you realize length is going from 1.2 to 1.8? By what factor is length increasing? बेटा लेंथ किस फैक्टर से इंक्रीज कर रही है हाउ डू आई नो सर लेंथ किस फैक्टर से इंक्रीज कर रही है what can you do you can take the new length 1.8 divide by the old length that is 1.2 3 over 2 that is 1.5 that means if you multiply the old length by 1.5 you will get the new length if your length is getting 1.5 factor resistance भी कितने फैक्टर से बढ़ेगी 1.5 के फैक्टर से your original resistance was 26 अब क्या हो जाएगी 26 into 1.5 what does this come out to be बताओ बेटा ये क्या आती है 26 into 1.5 this comes out to be 39 अच्छा अभी आपने सिर्फ लेंथ का फैक्टर अकाउंट फॉर किया है बच्चे अभी आपने सिर्फ लेंथ का फैक्टर अकाउंट फॉर किया है व्हाट अबाउट द एरिया लेट्स एनालाइज दैट एज वेल फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया क्या है 5.8 10 इज द पावर ऑफ माइनस 7 इनिशियल वैल्यू ऑफ एरिया क्या है बेटा 7.9 10 इज द पावर ऑफ माइनस 7 कैन यू कैलकुलेट द फैक्टर बाय विच एरिया हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड yes sir sure why not this comes out to be 0.734 so if I multiply the area by 0.734 I will get this area okay no problems up till now. Now you have to remember a second key point. Resistance is inversely proportional to area. सर इसका मतलब क्या है बेटा इसका मतलब ये है कि if your area is getting multiplied by a factor of 0.734 it is becoming 0.734a your resistance will get divided by this factor due to inverse proportionality बेटा इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में जिस फैक्टर से एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसी फैक्टर से दूसरा वेरिएबल डिवाइड हो रहा होता है 39 divided by 0.734 what does your final resistance comes out to be my final resistance comes out to be 53 ohms easy peasy lemon squeezy, how beautiful physics is. I sometimes imagine how lucky I am to teach this subject. Okay, now let's move ahead. The 2500 volts heater is used in a country which cost electricity around $0.3 per kilowatt hour. Okay. Calculate the cost of using the heater continuously for 2 days. Easy peasy. So your power is 2500 watts. This is equivalent to what? 2.5 किलो वोट्स बेटा आप कितने दिन के लिए हीटर चला रहे हो 2 आवर्स what will your time turn out to be 2 into 24 that is 48 hours can you calculate the energy is equals to power into time power is 2.5 kilowatts
You have 48 hours का running time. Can you calculate the energy? 2.5 into 48. The energy comes out to be what? 120 kilowatt hours. This is your total energy. Now, can you realize 1 kilowatt of energy costs $0.3? By a kilowatt of energy causes what? $0.3. 120 kilowatt hour of energy will cause X. निकाल लो 120 इंटू 0.3 कितने डॉलर्स बनते हैं ये 120 इंटू 0.3 ये कितने डॉलर्स बन गए बेटा $36 is your cost. Simple. Nothing complicated here. इतना आसान है आगे बढ़े चलो let's move ahead. The voltage across a primary coil of a 100% efficient transformer is this. This is your voltage primary. And the voltage across the secondary coil is this. Perfect. You have the secondary coil ka voltage as well. The current in the secondary coil is this. Perfect. This is your IS. Calculate the current in the primary coil. You have to calculate the current in the primary coil. How will you do that? Yes, geniuses. How will you do that? You will say voltage primary over voltage secondary is equals to current secondary over current primary. Do you have the voltage primary? Yes. 220. Do you have the voltage secondary? Yes. Do you have the current secondary? Yes. Do you have the current primary? No. Can I calculate it? Yes. Okay, so you just do the calculation. Your primary current comes out to be 0.14 ampere simple. Okay, now you have to calculate the ratio of the number of turns on the primary coil to the number of turns on the secondary coil. आपने NP over NS निकालना है. Now, do you remember NP over NS is equals to what? VP over VS. What is your primary voltage? 220. What is your secondary voltage? 12. Divide kar do 220 divided by 12. The ratio comes out to be 18.3. In IGCSE physics, we round off our answers. Your ratio comes out to be 18. Simple, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. During beta decay, one of the neutron in the nucleus changes state. What happens to this neutron? बेटा इस न्यूट्रॉन को क्या होता है बीटा डिके में न्यूट्रॉन के साथ क्या होता है neutron becomes proton and an electron is released. ये आप कह दोगे. During beta decay, one of the neutrons in the nucleus changes state. What happens to this neutron? क्या होता है इस न्यूट्रॉन को? The neutron gets converted into an electron and proton. न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाता है into an electron and proton. Okay. Now explain how charge is conserved during this change. हमने बताना है चार्ज किस तरह कंजर्व रहता है during this change. So you will say the charge on proton is +1. The charge on electrons is -1. Hence, the overall charge on products becomes 0. बेटा जो प्रोडक्ट में आपका एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है सो यू विल हैव अ +1 चार्ज. सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज हो रहा है बीटा पार्टिकल की फॉर्म में. हेंस द ओवरऑल चार्ज ऑन द प्रोडक्ट्स बिकम 0. चलो मैं करके दिखा देता हूँ. लेट मी डू एन एग्जांपल हियर. लेट्स से यू हैव सोडियम Na2311. दिस इज अंडरगोइंग बीटा देखिए ये 12 हो गया. क्या आप रियलाइज कर सकते हो प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो गया सो यू हैव अ +1 का चार्ज हियर एंड अ बीटा पार्टिकल इज आल्सो रिलीज. बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 का चार्ज है. बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट. हेंस यू हैव अ ओवरऑल चार्ज ऑफ 0. Complete the nuclide equation for the alpha decay of radon to form an isotope of polonium. अच्छा जी अल्फा डिके में क्या होता है योर मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 दिस बिकम्स 208. योर प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 दिस बिकम्स 84.
+4 टू अल्फा पार्टिकल। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिगर 9.1 shows the sun as the central dot। अच्छा ये सन आ गया सेंट्रल डॉट। And the planets Saturn, Jupiter, and Earth labeled SO, JO, and EO। ठीक है भाई। जो आपके प्लैनेट के नेम का इनिशियल है वो ही आपके ऑर्बिट का नाम भी है। ठीक है। दे रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द अर्थ्स ऑर्बिट, द प्लैनेट्स अपीयर अलाइन। ठीक है। प्लैनेट्स अलाइन हुए हुए करेंटली। Saturn takes 30 years to orbit the sun and Jupiter take 12 years to orbit the sun। ओके। ठीक हो गया। सैटर्न जो है वो 30 years ले रहा है टू ऑर्बिट द सन, जुपिटर ले रहा है 12 years टू ऑर्बिट द सन। On figure 9.1, mark the position of Saturn and Jupiter 5 years after the original position shown। Label these positions S1 and G1। Show your working। आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Saturn जो है वो 30 years ले रहा है टू कंप्लीट दिस रोटेशन। ओके, तो आप ये कह सकते हो, आप हम्बली ये कह सकते हो कि आपको 30 years लग रहे हैं टू कवर एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। हाउ मच ऑफ एन एंगल विल यू कवर इन 5 years? एक्स। बेटा आपको 30 years लग रहे हैं टू कवर एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। हाउ मच विल यू कवर इन 5 years? कैन एनीवन टेल? 5 into 360 divided by 30, your x comes out to be 60 डिग्री। तो आप जो है मूव कर रहे हो एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मे बी योर पोजिशन इज समवेयर हियर आफ्टर रोटेटिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। ठीक है। आफ्टर रोटेटिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यू आर पोजिशनड समवेयर हियर। अब आप कहोगे सर मैं क्या तुक्के में 60 डिग्री बनाऊंगा? How will I know where to draw 60 degree? For that, you will use a useless thing in your geometry box known as protractor। अब प्रोट्रैक्टर किस तरह प्लेस करेंगे? मिडिल में रखा प्रोट्रैक्टर। ओके। और इस तरह आपने प्रोट्रैक्टर को रख दिया। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आपने लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस। सिंपल। ठीक है। दिस इज हाउ यू विल ड्रॉ ए लाइन ऑफ 60 डिग्री। सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, अभी J1 का हमने बनाना है। नाउ जुपिटर के लिए वी विल डू द सेम थिंग। अच्छा, लेट मी ब्रिंग दिस वर्किंग ऑन द डाउन साइड। ओके, अल्लाह अकबर। लेट्स पुट इट हियर। दिस इज फॉर सैटर्न। ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये सैटर्न के लिए। व्हाट इज फॉर जुपिटर? जुपिटर के लिए किस तरह करेंगे? सेम चीज करेंगे बेटा, सेम एग्जैक्ट सेम चीज। जुपिटर इज टेकिंग 12 years to cover 360 डिग्रीज। How many years, yeah, how many degrees will Jupiter cover in 5 years? X निकाल लो। X is equals to 360 into 5 divided by 12। निकालो जरा क्या आता है। हाँ जी, 150 डिग्रीज। अब 150 डिग्रीज भी किस तरह ड्रॉ करना है? अगेन प्रोट्रैक्टर लोगे and you will place it in the middle here and draw a line at an angle of 150 degrees like this। दिस इज योर जुपिटर J1। सिंपल। ठीक है। प्रोट्रैक्टर तो आई होप अल्लाह करे यूज करना आता हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। On figure 9.1, mark the position of Saturn and Jupiter 20 years after the original position shown in figure 9.1। ठीक है। अब 20 years के बाद बनानी है। लेबल दिस पोजीशन S2 and J2। तो ये तो बड़ा इजी है। हाउ विल यू मार्क द पोजीशन आफ्टर 20 years? चलो, Saturn is taking 30 years to cover। अगेन Saturn की वर्किंग पहले कर लेते हैं। सिंस इट्स अ लार्जर प्लैनेट 30 years ले रहा है 360 डिग्रीज कवर करने के लिए। 20 years में कितने डिग्रीज कवर होंगे? x। x इज इक्वल टू 360 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30। कैन यू कैलकुलेट दिस आंसर बेटा? ये आंसर निकाल सकते हो।
This comes out to be 240 degrees. So also one more thing I just realized कि हम जुपिटर यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे. We will mark Jupiter on the orbit of Jupiter. जुपिटर का ऑर्बिट इनवर्ड वाला है ना, तो इसको यहाँ पे मार्क कर दो. ठीक है. नाउ हाउ विल वी मार्क सैटर्न. सैटर्न की सेकंड पोजीशन कैसे मार्क करेंगे 240 डिग्रीज पे. तो मे बी ये इधर आ जाओ आप. 240 डिग्रीज इज समवेयर हियर. इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं. 240 डिग्रीज इज समवेयर हियर. दिस इज रफली S2. ओके. अब जुपिटर की बारी आ गई है. लेट्स डू द सेम थिंग फॉर जुपिटर. जुपिटर कितने ईयर्स ट्रैवल कर रहे हैं 20. ओके. 20 ईयर्स में कितने डिग्रीज ट्रैवल करेगा जुपिटर इफ इट इज टेकिंग 12 ईयर्स टू कंप्लीट 360 डिग्रीज. क्या आप निकाल सकते हो. x इज इक्वल टू 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 12. देखते हैं ये क्या आता है. डिवाइडेड बाई 12. This comes out to be 600 degrees. Now you have to be careful बेटा. 600 डिग्रीज का मतलब क्या है कि जुपिटर ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट परफॉर्म कर ली. जुपिटर ने एक पूरी रेवोल्यूशन कंप्लीट परफॉर्म कर ली. 600 डिग्रीज में से कितने डिग्रीज फिनिश अप हो गए. बेटा जुपिटर अगर एक रेवोल्यूशन परफॉर्म कर लेगा तो 600 डिग्रीज में से कितने डिग्रीज फिनिश हो जाएंगे. 360. ओनली 240 डिग्रीज रिमेन. जुपिटर अगर 240 डिग्रीज फर्दर रोटेट करेगा तो कहाँ आ जाएगा. समवेयर हेयर J2. सर ने क्या किया बेटा. देखो जुपिटर की टोटल एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ रही थी 600. बट वंस द जुपिटर रोटेट्स कंप्लीटली अराउंड दिस ऑर्बिट 360 डिग्री तो गए माइनस कर दो. द रिमेनिंग डिग्रीज आर 240 डिग्री पे आपने जुपिटर बना दिया J2. सिंपल. अब आगे आ जाओ. State what is observed from Earth after 20 years. आपने बताना है कि अर्थ के ऑर्बिट से क्या लगेगा आफ्टर 20 ईयर्स. आफ्टर 20 ईयर्स अर्थ कहाँ पे होगा. यहाँ पे ही होगा. अर्थ तो अपनी पोजीशन को नहीं छेड़ेगा. आफ्टर 20 ईयर्स अर्थ से हमें क्या दिख रहा है कि जुपिटर एंड सैटर्न हैव अलाइन. बेटा 20 साल बाद आपको अर्थ के ऑर्बिट से क्या नजर आ रहा है. जुपिटर एंड सैटर्न हैव अलाइन. तो लिख लो यहाँ पे दैट जुपिटर एंड सैटर्न हैव अलाइंड. हैव अलाइंड. इससे टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू डिस्क्राइब ईच प्लैनेट. जुपिटर क्या है. गैसियस है और लार्ज है. जुपिटर है गैसियस एंड लार्ज. अर्थ क्या है. रॉकी एंड स्मॉल. ठीक है. अर्थ क्या है. रॉकी एंड स्मॉल. ठीक हो गया. अब आप क्या करोगे फिर. लास्ट देखो ये क्या लिखा हुआ. द एवरेज डेंसिटी ऑफ जुपिटर इज मच लेस देन दैट ऑफ अर्थ. अच्छा जी. डेंसिटी ऑफ जुपिटर is less than the density of Earth. Perfect. The gravitational field strength at the surface of Jupiter is greater. अच्छा जी. Gravitational field strength at the surface of Jupiter is greater than the gravitational field strength of Earth. Okay. Explain how these differences in density and in gravitational field strength are consistent with your answer in C part 1. अच्छा. First of all, density के difference आपके आंसर इन सी पार्ट 1 को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं. कैन यू रियलाइज जुपिटर इज मोस्टली गैसियस. गैसियस है तो इसकी डेंसिटी लो होगी कंपेयर टू अ सॉलिड अर्थ या रॉकी अर्थ के कंपैरिजन में योर डेंसिटी विल बी लो. ठीक है. तो यहाँ पे आप लिख लो जुपिटर हैज अ लो डेंसिटी. हैज अ लो डेंसिटी since it is mostly made up of gas. Simple. Jupiter has a low density since it is mostly made up of gas. Okay. अब gravitational field strength का difference बताओ. How will you tell that
अबाउट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहोगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में कि द वॉल्यूम ऑफ जुपिटर इज लार्ज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। देख सकते हो, जुपिटर इज लार्ज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ जुपिटर लार्ज है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, डू यू रिमेंबर वन फॉर्मूला? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। बेटा जुपिटर का वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो डेंसिटी लो होने के इफेक्ट्स को ओवरकम कर लेता है। देखो, जुपिटर का वॉल्यूम इज वेरी वेरी ज्यादा, लेट्स से 100 टाइम्स ज्यादा कंपेयर टू अर्थ, और डेंसिटी उसकी सिर्फ 2 टाइम्स कम है कंपेयर टू अर्थ। व्हाट विल हैपन? दिस विल कॉज द ओवरऑल मास ऑफ जुपिटर टू बी ग्रेटर देन द मास ऑफ अर्थ। अगर मास ऑफ जुपिटर ग्रेटर है कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। थोड़ा सा समझ लो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज कि जुपिटर हैज अ लार्जर वॉल्यूम compared to Earth. This causes the mass of Jupiter to be larger than Earth. This causes the gravitational field strength of Jupiter to be greater than Earth. तो इसको लिख लो बिट बाय बिट करके। यू विल से, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा करके रख देते हैं। यू विल स्टार्ट लाइक दिस। यू विल से, ओहो, यू विल से Jupiter has a larger volume compared to Earth. This causes the mass of Jupiter to be greater than the mass of Earth. Hence, gravitational field strength of Jupiter is greater than the gravitational field strength of Earth. Simple, nothing complicated. Easy. आगे बढ़ते हैं। The average density of Jupiter is this, its volume is this। आपने मास निकालना है, इससे आसान क्या सवाल हो सकता है? Mass is equals to density into volume। ओके, डेंसिटी क्या है बेटा? 1300 इन मीटर क्यूब। व्हाट इज योर वॉल्यूम? 1.4 इंटू 10⁻15 किलोमीटर क्यूब। हाँ, ये थोड़ा समझता है। डू यू रिमेम्बर किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, क्या करोगे? Multiplied by 10 is the power of 3 का square, that is multiplied by 10 is the power of 6। If you want to go from kilometer cube to meter cube, क्या करोगे? 10 is the power of 3 का cube, that is 10 is the power of 9 से multiply करोगे। So you will say 1.4 10 is the power of 15 into 10 is the power of 9। Can you now calculate the mass? हाँ जी, मास निकाल सकते हो। देखो, हमेशा कन्वर्जन याद नहीं रखना है, जो राइट साइड पे मेथड दिखाया है वो अप्लाई कर लेना है, ठीक है? किलोमीटर से मीटर याद रख लो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, फिर स्क्वायर और क्यूब के आप खुद ही निकाल सकते हो। द मास कम्स आउट टू बी 1.8 10⁻27 kg। सिंपल एज दैट, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हेयर। आगे बढ़ते हैं। शो दैट 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस। अब ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁻8। टाइम इन 1 ईयर क्या होगा? 365 days मल्टीप्लाइड बाई 24 hours इन ईच डे, 60 minutes in each hours, 60 seconds in each minute। Light year comes out to be 9.5 10⁻15 meters। State one measurement that is taken when determining the speed v at which speed galaxy is moving away from the earth। The change in wavelength। जब भी आप स्पीड निकाल रहे होते हो तो आप क्या लेते हो? चेंज इन वेवलेंथ।
of the galaxy's starlight. So you will say change in wavelength of the light coming from galaxy. Simple. Coming from galaxy. Easy peasy lemon squeezy. Write down an equation relating V and D of a faraway galaxy. V divided by D is equals to your Hubble space constant h naught. और अच्छे बच्चे हो तो यहाँ पे define भी कर दो. Hubble space constant is h naught. Hubble's constant. State how the distance d of a galaxy can be determined other than by using the equation in 2. Distance of galaxy और किस तरह निकाल सकते हैं? By seeing the brightness of a supernova. Brightness of a supernova. I think this marks the end of this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below and I will be glad to answer.